Hello everyone, I'll be talking about diabetes and heart, and this talk will be divided into two topics, part 1 and part 2. In part 1 we'll cover how do you identify heart diseases in a patient who is diabetic, and part 2 will cover about prevention and treatment of diabetes involving the heart. I am Dr. Amit Bhushan Sharma, Director Unit Head Cardiology, Palace Hospitals, Gurgaon. Diabetic patients, as you know, are more prone for heart diseases, heart attacks and brain strokes. On an average, WHO estimate says that 60% of patients who are having heart attacks are diabetic patients. The incidence of sudden cardiac death is 3 times higher in a diabetic population as compared to a non-diabetic population. What are the symptoms? Ideally, diabetic patients will not have any symptoms before a heart attack. They might have a silent attack. You heard it right, it may not have any symptoms at all. Classical symptoms of angina like pain in the chest on walking, pain in the jaws while walking, pain in the elbows while walking will not be there. In such patients, many times we are fooled into thinking that whether it is acidity, whether it is gastritis, whether it is shortness of breath, whether it is asthma, whether it is plain anxiety, tiredness, how do you identify whether this is all that or whether it is a sinister heart attack underlying a diabetic patient? If a diabetic patient starts having shortness of breath after the age of 50 and it is a recent onset shortness of breath, since the last 15 days, since the last 20 days, it is almost always cardiac. Asthma is a disease of adolescence. Asthma will not present at the age of 50-55. अगर आप डायबिटिक हैं और आपको अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस की तकलीफ हो रही है, क्लासिकल हिस्ट्री रहेगी कि मैं 3 या 4 किलोमीटर पहले चल लेता था, अब 500 मीटर के बाद या 1 किलोमीटर के बाद मुझे सांस की तकलीफ होती है और मैं चल नहीं सकता आगे। दूसरा, अगर एसिडिटी या गैस अनयूजुअली बन रही है जो नॉर्मल पैंटोसिड से ठीक नहीं होती है या रैंटेक से ठीक नहीं होती है, तो सोचिए कि आप हार्ट डिजीज से डील करें, स्पेशली इफ यू आर अ डायबिटिक पॉपुलेशन। दीज टू टर्म्स आर कॉल्ड एज एंजाइना इक्विवेलेंट। तीसरा सिम्टम होता है अगर चलने में आपको आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है तो भी वो एक एंजाइना इक्विवेलेंट माना जाता है। चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा आ रहा है, गिर गए हैं बेहोश होके, तो वो भी इसको भी एंजाइना इक्विवेलेंट मानते हैं। बहुत बार डायबिटिक पेशेंट्स में दर्द की नसें अपनी सुन हो जाती हैं छाती की, तो पेन दोनों बाजुओं में होता है या उल्टे बाजू में होता है। चलेंगे तो बढ़ जाता है, बैठेंगे तो कम हो जाता है। पसीना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये एक चौथा लक्षण है डायबिटिक पेशेंट्स में। एसी चल रहा है लेकिन आपको पसीना आ रहा है। 5वां चीज़ है फीलिंग ऑफ सफोकेशन। रूम में बैठे हैं, सब नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को सांस ज़्यादा चल रहा है, अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं एलर्जी है, लेकिन वो हार्ट होता है। ये चीज़ आपको नज़र में रखनी है।